Hello guys, today we will learn about addition the validations for a particular field. Now what do you mean by that? For example, there is a field for input and you need to input your name. But it's obvious that every name in this world consists minimum of 3 letters and maximum it can be of 50 letters, right? The assumption is 50 but it's minimum of 3. And also, whenever you hover this input, there pop-up comes which is hinting you or indicating you what should you type in the input box. So that is nothing but description. And here an example comes of actually what you should need to type, right? This is a basic structure. So what is there is you need to create a class. उसके अंदर int वगैरह तो ठीक है. मेन के लिए सबसे पहली बात तो हम क्या करते थे मेन देन उसका डेटा टाइप है str इक्वल टू अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे EFG. So if I put the name as empty, then the default value which will get saved to the database will be EFG. बट अब यहाँ पे हम फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू फील्ड क्योंकि बहुत सारी फील्ड के वैलिडेशन हैं तो ऐसा एक लगाएंगे हम लोग ब्रेसेस और फिर यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर. ओके कूल ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखना. माई इनपुट नेम शुड बी ऑफ मिनिमम 3 letters. My input name should be of maximum 50 letters. Whenever I hover a cursor on this input, a box comes up which will tell me what should I type in this. So that will be a description. And here downwards, there should be an example of actually what I should type. So it is an example. So you got all these 4 values and their role. And the spread operator basically means spread all the values so that database में जब ये सेव होगा so it can get saved individually not as a whole. ठीक है. अब यहाँ पे लिखा है optional. Optional basically means department is not necessary. You don't need to put department. If it's not put it, then the default value will be equal to general. And if it's put it, then it's obvious that the department value will be that value which you want to put in. ठीक है. और यहाँ पे ग्रेटर देन है. ग्रेटर देन बेसिकली मीन्स अब सैलरी है और उसकी सैलरी मैं मान लेता हूँ एवरेज सैलरी 80,000. चलो 10,000 मान लेते हैं. तो 10,000 तो मिनिमम सैलरी मिलनी चाहिए किसी को भी किसी भी काम के लिए. तो व्हाट यू विल राइट इज फील्ड कर्ली ब्रेसेस स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000. ग्रेटर देन इक्वल टू ये होता था जावास्क्रिप्ट में. पाइथन में इट इज जीई. ठीक है. लेस देन इक्वल टू के एलटीई होता है इन जावास्क्रिप्ट बट इट्स पाइथन इट्स एलई. ओके. एंड फॉर लाइक पैटर्न्स लाइक एट द रेट जो हम यूज करते हैं डॉट यूज करते हैं फॉर दैट वैलिडेशन यू यूज regex. तो ईमेल में आए फोन में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट फील्ड इसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर और यहाँ पे लिखोगे regex इज इक्वल टू आर दिस एंड दिस. अब यहाँ पे खाली क्यों है. दिस इज एम्प्टी. दैट मीन्स इट विल नॉट चेक एनी ऑफ द स्पेशल पैटर्न्स. इट विल नॉट चेक. और अगर मुझे स्पेशल पैटर्न चेक करवाने थे तो मैं यहाँ पे एट द रेट डॉट ऐसे करके लिख सकता था. Okay, cool. So that's it for adding the validations in an input field, and this is the whole structure, and I've given you what you need to type here to get the structure. Thank you.